जय जगन्नाथ सांगने तो आज आ गोटे वीडियो स्वागत करुच्ची। आज वीडियो आम देखा प्राइमरी इनफॉरमेशन सोर्सेस। तो ये कौन कौन देखिए जर्नल, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, पेटेंट, स्टैंडर्ड्स, थीसिस, ट्रेड लिटरेचर ए सब विषय देखिए। देखो प्राइमरी सोर्सेस रे कौन आसे, प्राइमरी सोर्स क्या कह, प्राइमरी सोर्स होची जोटा कि ओरिजिनल फास्ट एंड इनफॉरमेशन अनप्रोसेस्ड इनफॉरमेशन जोटा कि फास्ट टाइम पब्लिश होची ताको आमे कौन कहबा प्राइमरी सोर्सेस, जोटा रिप्रेजेंट करे नुआ नॉलेज से गुडा कौन कहि परिबा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल रिसर्च। तो छटा मेजर प्राइमरी सोर्सेस रहउची, कौन कौन रहउची देखो। फर्स्ट देखो जर्नल्स, तो बोथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रे रहे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्राइमरी सोर्स peer reviewed research published periodically. Example गुड़ा देछि नेचर, साइंस, IJLIS। देन आसिला कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, एटा प्रिंट बा ऑनलाइन भी रहे। तो फास्ट रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च माने एक्चुअल जर्नल पब्लिश हेबा पूर्व एटा हेता है मोस्टली ISBN ISSN असाइन होया को कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग जो पब्लिश हुए SCM IEEE प्रोसीडिंग्स एगुड़ा। देन आसिला पेटेंट, बोथ प्रिंट और ऑनलाइन फॉर्म रे रहे। एटा होचे लीगल प्रोटेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। एटा कौन करे क्रिएटर को राइट माने ओरिजिनल क्रिएटर को राइट दिए निजर कंटेंट को प्रोटेक्ट करिया पे लीगल राइट। नोवेल इन्वेंशंस ओनली filed with patent office India IPO Indian patent office। देन आसिला स्टैंडर्ड्स टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जेंति ISO हला, BIS हला, ASTM IS एगुड़ा स्पेसिफिक स्टैंडर्ड जोड़ा कि इंटरनेशनली फॉलो हुए। देन थीसिस और डिसर्टेशन, ओरिजिनल PhD बाय MPhil रिसर्च, अनपब्लिश्ड प्राइमरी सोर्सेस, मोस्ट कंप्रेहेंसिव आमर शोध गंगा प्रोक्वेस्ट एथिरे अवेलेबल रहे। देन आसिला ट्रेड लिटरेचर, मैन्युफैक्चर इन्फो, कैटलॉग ब्राउचर ये सब गुड़ा। तो प्राइमरी सोर्सेस विषय आगु भी आम देखी कि आइडिया हो जाइथिला। एबे देखो आउ किछटा इन्फॉर्मेशन देखियो, किछटा कंफ्यूजन रह जाए पिलान भितर। देखो जते periodicals देखिए, periodicals are defined as the publications with the same title that are intend to be published indefinitely। माने कोन एगुड़ा सीरियली पब्लिश हुए जेमि वीकली हला, बाई वीकली, मंथली, क्वार्टरली पब्लिश हुए। प्रति इश्यू रे कोन होइथा होची सीक्वेंशियल डेटेड होइथा होची और नंबर्ड होइथा होची जेमि इश्यू नंबर। ओके देखियो कौन सी मैगजीन इश्यू नंबर, वॉल्यूम नंबर ए टाइप रो डेटेड होइथा होची। ऑल इश्यूज इन वॉल्यूम्स एंड कंसेक्यूटिव पेजेस बुझला। तो देखो बहुत टाइम रे हमहु पीरियडिकल्स और सीरियल भीतर कंफ्यूजन रहे। ए सीरियल इज एनी पब्लिकेशन दैट इज सीरियली पब्लिश्ड एंड इंटेंड टू कंटिन्यू इंडेफिनिटली। तो रिसर्च जर्नल्स, ट्रेड, बिजनेस जर्नल्स, न्यूज़लेटर, न्यूज़पेपर, पॉपुलर मैगजीन, डायरेक्टरीज, annual journals, indexing and retrieval journals एगुड़ा कॉमन टाइप ऑफ periodicals। आइडिया है ना। मल्टी वॉल्यूम बुक्स देखो एडा मन रखो, एडा इंपोर्टेंट मल्टी वॉल्यूम बुक्स एंड एनसाइक्लोपीडिया आर नॉट कंसिडर्ड सीरीज बिकॉज ऑफ पब्लिकेशन केसेस व्हेन फाइनल वॉल्यूम इज पब्लिश्ड। एडा मन रखो। नेक्स्ट देखो स्कॉलरली जर्नल का है द जर्नल रिपोर्ट ऑन ओरिजिनल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन typically on a particular nature or within a particular academic discipline। माने गोटे टॉपिक ऊपर बा गोटे डिसिप्लिन पार्टिकुलर डिसिप्लिन ऊपर जदि हम करछु। द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए स्कॉलरली जर्नल इज टू प्रोवाइड द मोस्ट अप टू डेट इंफॉर्मेशन इन द फील्ड। माने जोटा मोस्ट रिसेंट रिसर्च गुडा को होची जदर कि किछि न्यू आइडिया सजेस्ट हे परिबो बा सब्जेक्ट मैटर जोटा कि डिस्कशन रे आसी परिबो। आर टारगेट ऑडियंस के यूनिवर्सिटी रिसर्चर, इंस्ट्रक्टर or students। Peer-reviewed journals are also referred as peer-reviewed journals, typically professional माने एगुड़ा कौन हुए इवैल्यूएट करंदी जो आर्टिकल्स गुड़ा को आगु पब्लिश हेबा पूर्व कौन करा जाए से गुड़ा एक्सपर्ट्स मानक द्वारा इवैल्यूएट करा जाए, रिव्यू करा जाए। देन आसिला ट्रेड मैगजीन्स डिजाइन फॉर इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स स्टडीइंग द इंडस्ट्री। तो एथिरे कौन था बिजनेस न्यूज़ by product information, advertising, technology और legal trend। Our objective कौन to increase
practical industry by professional knowledge or information, provide industry news, contacts and industrial updates. Articles in trade publication are typically written by subject matter experts. ଆଉ जो publication गुड़ा था एगुड़ा peer reviewed न था, बस industry specific information content concerns गुड़ा का cover होता है सेथरे. Then आसला e-journals. E-journal are defined as periodicals that are serially produced, published and distributed through electronic network and on a national or international scale. By online journals by e-journals COT. Then आसला patent. Patent को कौन define करा जाए? Exclusive right or title granted by government agency or license for a fixed term to the exclusive right to manufacture, use or sell an invention, excluding all others. तो ये देखो पेटेंट जदि तमरो किछि जिंस नुआ क्रिएशन करछ तमरो जदि पेटेंट अछि सर्टेन पीरियड पे रहे एडा रिन्यूअल होइथा तमरो जदि सर्टेन पीरियड पर्यंत पेटेंट अछि तमे सेही जदि प्रोडक्ट आउ के यूज करियो चाहूची इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर बा सेल करियो चाहूची से तमरो परमिशन नेबा पड़ियो एज द तम पाखरे राइट अछि एक्सक्लूसिव राइट अछि लीगली तम परमिशन देले से सेल कर परियो सेम टाइप रो प्रोडक्ट बा सेम डिजाइन जहाँ भी रहिला. The patents are regarded as unique source of scientific and technical information due to the fact that a granted patent grants its owner exclusive right to his invention and allow him to prevent others from using it without authorization. Then asila standards. A standard is a set of guidelines used to ensure the quality of a procedure. जेमती आमे standards गुड़ा देखो ISO standard, BSI ये जो standards गुड़ा था ये कौन ensure करे quality of a procedure बा quality of the goods बा services. देखो आमे बहुत गुड़े products किनिया समय रे हमको कोई था उसे ISI mark देखिया पे gold और BSI तो ऐसा मार्क गुड़ा कहीं दिया जाए ये गुड़ा होची industrial standard. To ensure that materials, product, process and services are suitable for the intended application, standards are documents that provide requirements, specification or characters that can be considered consistently applied. तो जनरल देखिए बोले स्टैंडर्ड बहुत गुड़े कैटेगरी जाए देखो कौन कौन The foundation of scientific and technological practice. Fundamental standards concerned with the measurement and length, mass, time, temperature, various type of energy, force, other fundamentally quantifiable entities. एटा हला गोटी जोटा कि हमर सब गुडा का फंडामेंटल स्टैंडर्ड गुडा चल जाए लेंथ मास टाइम एगो सब गुडा फिजिक्स रे पढी जो से सब जो स्टैंडर्ड गुडा था जे लेंथ रे यूनिट रहिबो केते की 1 सेंटीमीटर केते रहिबो. Technical standards apply to product, processes, asset and services. Next asila dissertation. तो dissertation basically document जोड़ा submit करा जाए to support the academic degree that presents the research and conclusion of the author. Our purpose कौन to provide information and present academic content. A thesis or dissertation may consist of a new data on an important issue, an innovative data collection method, a novel analysis of an existing data set to answer important new question. बुझिला. Next देखो trade literature. People standing by the side of the road at an exhibition may hand out pamphlets, printed sheets, etc. एगुड़ा जो सर्विस वेरियस गुड्स एंड सर्विस से माने सेल करिया पे जो कथा हो सेटा गोटे टाइप रो ट्रेड लिटरेचर जेमती बोतल किनले तार पैकेजिंग रे कौन डिस्क्रिप्शन दी था कौन कौन कंटेंट अच्छी प्रोडक्ट इनफॉरमेशन कौन कंपोजिशन अच्छी ए सब हला कौन माने ए सब इनफॉरमेशन गुड़ाक मिनिमम रही दरकार कंपोजिशन मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डोसेज एगुड़ा एसेंशियल गोटे ट्रेड पब्लिकेशन रे. तो ये जो बेसिक डेफिनेशन गुड़ा किछिटा कहिदेली बर्तमान जर्नल्स गुड़ा देखिए जर्नल्स तो आमे देखिले स्कॉलरली एकेडमिक जर्नल्स ट्रेड जर्नल्स पॉपुलर जर्नल्स देन ओपन एक्सेस जर्नल्स देन प्रेडेटर जर्नल्स. तो तार डेफिनेशन तो आउ लागुनी आवश्यक बोली तार कैरेक्टर्स गुड़ा देख फास्ट आसला पीरियोडिसिटी periodically published monthly weekly then peer review then original content
माने ओरिजिनल फाइंडिंग न्यू थ्योरीज गुड़ा थाए एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स गुड़ा देखियो मिले देन आईएसएसएन देखो प्रति जर्नल कौन था आईएसएसएन नंबर था आईएसएसएन होची यूनिक 8 डिजिट नंबर गोटे देन मल्टी ऑथर्स देन मोस्ट करंट जर्नल रिप्रेजेंट करे सबुठ लेटेस्ट डेवलपमेंट गुड़ा फास्टर देन द बुक्स फॉर डिसेमिनेटिंग न्यू नॉलेज आ वाइड कवरेज करे साइटेशन इंपैक्ट माने प्रति जर्नल रो इंपैक्ट फैक्टर था ना केते फ्रिक्वेंटली जर्नल गुड़ा लोक पढुचंदी और साइट करछंदी देन प्रिंट जर्नल बर्तमान धीरे धीरे प्रिंट जर्नल्स गुड़ा बहुत कम हेई आसलानी प्रिंट जर्नल रे कोन आसीयो फिजिकल कॉपी आसीयो प्रिंटेड पेपर रे जोटा कि आमे सब्सक्राइब करियो पड़े एनुअली देन बाइंडिंग एनुअल वॉल्यूम्स आर कलेक्टेड एंड बाउंड एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर परमानेंट आर्काइव देखो बाउंड जर्नल्स है माने कोन वर्ष सारा जहां भी जर्नल आसिले ताको कंपाइल करगी बाइंडिंग करगी रखा जाय सेटा को जे बाउंड जर्नल्स देन एक्सेस अवेलेबल इन लाइब्रेरी रीडिंग रूम्स आराम रे एक्सेस था देन एब्स्ट्रैक्टिंग कवरेज covered by abstracting indexing services like chemical abstract index medicals library literature India रे जो देखियो current science annals of library information and studies library herald DJLIT देखो आर एडवांटेजेस कौन परमानेंट रीडेबल विदाउट टेक्नोलॉजी इजी टू बोरो एंड एनोट डिसएडवांटेज होची स्लो डिलीवरी स्टोरेज स्पेस दरकार सिंगल यूजर एट ए टाइम यूज करि परिबे आ इलेक्ट्रॉनिकली सर्च करी होबनी बहुत टाइम रे बेक जर्नल्स भी लेट रे आसे इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स बा ई जर्नल्स ए सब गुडा को डिजिटल फॉर्मेट रे रहे जेंदी पीडीएफ एचटीएमएल एक्सएमएल फाइल आ इंटरनेट रे हमें एक्सेस करि पारू त एथिरे कोन आसे ई आईएसएसएन माने इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ आईएसएसएन देखो एथिरे बेनिफिट हला मल्टी यूजर एक्सेस बहुत गुडे यूजर सेम टाइम रे एक्सेस करि परिबे फुल टेक्स्ट सर्च hyperlinks article hyperlink reference supplementary data गुडा को इजीली पाई परिबो आ गोटे जिंस एठी देनी ओके देखो आ गोटे जिंस रहले से गुडा कर कोन ई जर्नल्स गुडा रो डीओ ही थाए डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर जा द्वारा कि हमें इजीली ताको एक्सेस कर परिबा देन डाटाबेस एक्सेस थ्रू सब्सक्रिप्शन डाटाबेस जेंदी जेस्टर एप्सको साइंस डायरेक्ट इंडिया रे ई शोध सिंधु से प्रोवाइड करे एबे ओएनओएस आसलानी सेथिरे हमो बहुत गुडी जर्नल्स मिल जाए ओपन एक्सेस ई जर्नल्स डीओएज है लिस्टेड जर्नल्स +1 बीएमसी जर्नल्स जोरा फ्रीली एक्सेसिबल आर एडवांटेज मेन एडवांटेज होची इंस्टेंट एक्सेस एनीवेयर आ मल्टी यूजर ए दीरा होची मेन एडवांटेज देखो जनरल आ मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल्स गुडा अछि केते टाइप रो अछि सेटा देछि जोरा मल्टी डिसिप्लिनरी से गुडा बहुत गुडी सब्जेक्ट कवर करे मोस्ट प्रेस्टिजियस होची नेचर साइंस एगुडा को देन सब्जेक्ट स्पेसिफिक जोटा किछि स्पेसिफिक डिसिप्लिन कवर करे जेंदी जेएलआईएस लैंसेट आईट्रिपल स्पेसिफिक डिसिप्लिन सब्जेक्ट डिसिप्लिन गुडा देन ट्रेड जर्नल्स फॉर स्पेसिफिक प्रोफेशन और इंडस्ट्री पॉपुलर साइंस फॉर जनरल एजुकेटेड पब्लिक जनरल जर्नल गुडा को जेंदी साइंटिफिक अमेरिकन देन न्यू साइंटिस्ट then open access freely available online no subscription required किछि सब्सक्रिप्शन दरकार नै जे भी चाहिले एक्सेस करि परिबो +1 बीएमसी जर्नल्स डीओजे लिस्टेड जर्नल्स देन प्रेडेटरी जर्नल्स एगुडा होछि फेक पीयर रिव्यू जर्नल्स जोडा कोन करंदी लोक मानकर रिव्यू भी करंदी नि फॉल्सली चार्ज करंदी बहुत फीस एमानो अवॉइड करिया दरकार देखो केमि जानिबे एगुडा फेक बोली आमे बेलास लिस्ट देखि परिबा बेलास लिस्ट बर्तमान आर्काइव ही अछि बट सेथिरे कोन आगरो जो प्रेडेटर जर्नल्स गुडा लिस्ट गुडा को हमको मिल जाउथला देन देखो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स रो तो डेफिनेशन हमें देखि सचंदी कोन कलेक्शन ऑफ पेपर्स प्रेजेंटेड एकेडमिक कॉन्फ्रेंस बा सिम्पोसिया सेमिनार वर्कशॉप माने बिफोर पब्लिशिंग जर्नल आर्टिकल जोड़ा पब्लिश करे जाय थे रिसर्च रिगार्डिंग इन कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स इंडिया रे बहुत गुडे इंपोर्टेंट लाइब्रेरी साइंस गुडा का ऑर्गेनाइज हुए को मान करंदी इंडियन एसोसिएशन ऑफ एसएलआई एंड सी आईएसएल करे एनुअल देन इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कन्वेंशन आईएलए करे देन कैलिबर कन्वेंशन ऑफ ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इंप्लीमेंट करे देन नेक्लिन नेशनल
Convention on Library and Information Networking. ILIS, Innovation in Library and Information Science. SIS, Society for Information Science Annual Conference. एगुड़ा किछिटा कॉन्फ्रेंस रे एग्जांपल देछि आर मेन कैरेक्टर्स गुड़ा कोन आसियो कैरेक्टरिस्टिक्स एडा गोटे प्राइमरी सोर्स जुतिरे कि ओरिजिनल रिसर्च पेपर गुड़ा प्रेजेंट हुए बाय द ऑथर बा कोइ परिया फास्ट पब्लिक रिपोर्टिंग ऑफ द न्यू फाइंडिंग देन प्री पब्लिकेशन कारण एगुड़ा एक्चुअल जर्नल आर्टिकल पब्लिश हेबा पूर्वरु ही पब्लिश करतंदी देन आईएसबीएन बा आईएसएसएन जो गुड़ा को कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग हुए बाउंड प्रोसीडिंग हेले सेथिरे आईएसबीएन आसे आ जदी सीरीज प्रोसीडिंग होय सेथिरे आईएसएसएन आसे माने कंटिन्यू चालुची सेइडा कॉन्फ्रेंस टा माने प्रति वर्ष गोटे फ्रीक्वेंसी रे होउची तो सेइडा सीरियल दियंदी जदी एई वर्ष हिची आगु को नेक्स्ट ईयर हबो कि नै सियोर ने से गुडा रे मोस्ट कॉन्फ्रेंस एक्सेप्टेड पेपर गुडा कंपाइल करी गोटे फॉर्मल बुक हिसाब रे पब्लिश करा जाय आईएसबीएन दियंदी जदी बाउंड प्रोसीडिंग वैल्यू हुए पब्लिश then peer review papers reviewed by conference program committed before acceptance then timeliness faster to disseminate than journals in the cutting edge emerging research ऐसा गुड़ा then format print रे भी हुए बा digital form रे हुए online portal रे बा other form रे CD-ROM ए type रो then limited availability not always available in all libraries then citation indexed in Scopus Web of Science IEEE जदि इंडेक्स हेछि तबे ताको फॉर्मली हम साइट करि परिबा then full paper or abstract may contain full paper extended extract गुडा को then grey literature aspect माने केते प्रोसीडिंग्स गुडा को इनफॉर्मली पब्लिश हेता होछि जो गुडा इनफॉर्मली पब्लिश हेता होछि ताको हम ग्रे लिटरेचर रे कंसीडर कर दोछ देन आसला प्रिंट वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स गुडा को देखो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक रे मेन डिफरेंस रहला फॉर्मेट रे प्रिंट रे फिजिकल फॉर्म आसीओ इलेक्ट्रॉनिक रे डिजिटल फॉर्म देन एक्सेसिबिलिटी सेमिति ही अब लाइब्रेरी रे बा लिमिटेड सर्कुलेशन एक्सेस मिली परिबो जदी ऑनलाइन रे रहउछि समस्त को ग्लोबल एक्सेस मिली परिबो मल्टी यूजर एनीवेयर एनी टाइम देन सर्चेबिलिटी मैनुअल बरो होछि फिजिकल रे आ एथिरे कोन हजो फुल टेक्स्ट कीवर्ड सर्च देन डाटाबेस ओपेक रे मैनुअली कटले हबो एथिरे कोन IEEE एक्सप्लोर SEMDL स्ट्रिंजर स्कोपस एथिरे इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल रही एगुडा जो ऑर्गेनाइजेशन गुडा को अछि ए कॉन्फ्रेंस गुडा जो होछि एथिरे फुल फॉर्म गुडा मन रखि दो इन केस पचरि पारे देन असला पेटेंट एंड स्टैंडर्ड्स द कंबाइनली दे जाइछि देखो दुड डेफिनेशन ता हमें देखिले पेटेंट और स्टैंडर्ड्स रो पेटेंट का कहया पेटेंट होछि गोटे लीगल डॉक्यूमेंट granted by the government office that gives an inventor exclusive rights to make use माने जो जिनसटा प्रोडक्ट बनै छै ताको यूज करबा सेल करबा बा लाइसेंसिंग देबा स्पेसिफिक पीरियड पे से दे पारे और कोन एनुअल रिन्यूअल होए तो तार कैरेक्टरिस्टिक्स कोन ए हैला गोटे प्राइमरी सोर्स नोवेलिटी रिक्वायरमेंट देखो इन्वेंशन मस्ट बी न्यू माने कोन नोवेलिटी बा आगरु केबे पब्लिश हेइनी इन्वेंटिव were not obvious and industrially applicable. Legal document granted by government patent office, legally enforceable. Right. ताबरे structure देखो title, abstract, claim ये सब गुड़ा का legal scope रहा detailed description, drawings. Term valid for 20 years from the filing date. Okay. एडा मन रखो एडा question आसे validation period. Validation period हो जिकेते 20 years. Then public disclosure after granting full patent specification published and freely available. Classification classified by IPC International Patent Classification System. After that section था classes subclasses बहुत गुड़े होच. Then print and electronic access of patents. देखो print format जो देखिए official gazette of the patent office रे publish हुए IPO by Indian Patent Office. Intellectual property of India then electronic रे IP India e-patent search portal अछि जोडा free Indian patent search करि परिबा then international जो देखिबा e-space net EPO तो 140 million plus patents अछि world wide देखि परिबो visit करि के then USA Google patents USPTO then PCT बा WIPO patent scope WIPO
इंटरनेशनल पेटेंट्स गुड़ाक देखिपर। देन मूव करिया स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन। स्टैंडर्ड्स गुड़ा देखिथिले कौन डेफिनेशन देखिथिले रिकॉल करो। टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स जोटा कि एस्टैब्लिश करे यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन गाइडलाइंस फॉर मटेरियल प्रोडक्ट बा प्रोसेस सर्विस ए सब गुड़ा पे। तो प्राइमरी सोर्स बिकॉज दे कंटेन ओरिजिनल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। तो ये जो स्टैंडर्ड्स गुड़ा किए डेवलप करे एक्सपर्ट्स जो गुड़ा स्टैंडर्ड बॉडी गुड़ा भी अच्छी जो गुड़ा कि फर्स्ट टाइम पब्लिश करे जमिति आईएसओ हला बीआईएस हला एएसटीएम हला बीआईएस इंडिया रो आईएसओ डा इंटरनेशनल देन एएसटीएम होची यूएसए बीएसए होची यूके। देखो आईएसओ होची कोन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तार हेडक्वार्टर कोठी अछि जिनेवा स्विट्जरलैंड। देन बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स आर हेडक्वार्टर अछि दिल्ली। देन एएसटीएम होची अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स यूएसए टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एएसटीएम। देन बीएसए ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन जोटा कि यूके रो ओल्डेस्ट स्टैंडर्ड बॉडी। देन डीआईएन डेस्यूचेस इंस्टीट्यूट फॉर नॉर्मल माने एटा जर्मन रो स्टैंडर्ड। देन आईईसी इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन एसो गुड़ा मन रखि परियो। देन आसला थेसिस एंड डिसर्टेशन। देखो थेसिस और डिसर्टेशन हो ओरिजिनल रिसर्च सबमिटेड फॉर द एकेडमिक डिग्रीज। तो एटा कोन मोस्टली प्राइमरी रे जाए आर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखि परिबे कोन कोन अछि। देखो एटा भी मन रखो एटा बहुत टाइम रे पिलांगो कंफ्यूज होइते थेसिस कोन डिसर्टेशन कोन। देखो थेसिस होची कोन ओरिजिनल पीस ऑफ रिसर्च जोटा सबमिट करे जाए यूनिवर्सिटी रे एज ए पार्ट ऑफ हाईएस्ट डिग्री माने पीएचडी पाई एमफिल पाई मास्टर्स पाई एगुडा जो दिया जाए सेटा को कह जाए थेसिस। इट रिप्रेजेंट द कैंडिडेट्स ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज इन ए स्पेसिफिक फील्ड। डिसर्टेशन होची फॉर्मल डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग ए कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर एन एकेडमिक डिग्री। सम अथॉरिटीज डिफरेंशिएट ए थेसिस प्रूव समथिंग न्यू व्हाइल डिसर्टेशन डिस्कस एन एग्जिस्टिंग टॉपिक। ए टाइप रो डिफरेंशिएट माने मोस्टली हमें गोटे ही भाबी दोछु बट देखो बोथ रे ओरिजिनल रिसर्च रहे। देखो आउ कौन डिफरेंस देखो ए गुडा मास्टर्स रे भी डिसर्टेशन दियंती थेसिस डिपेंड कोची यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी आउ डिसर्टेशन रो जदी हमें देखियो डिसर्टेशन रो लेंथ केते रहे 60 टू 100 पेजेस थाए। ओके बट जेतेले हमें थेसिस देखियो थेसिस कोन थाए थेसिस पूरा डिटेल्स मोस्टली पीएचडी पिलांगर तो मिनिमम 150 टू 300 पेजेस थाए 300 प्लस भी पेजेस थाए। Then characteristics of thesis and dissertation both are primary source कारण original research content था एथिरे first hand knowledge most comprehensive most through primary resource माने एथिरे कौन 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 कवर हुए most comprehensive माने most thorough primary source cover हुए methodology literature review data analysis conclusion unpublished traditionally non commercially published कारण एगुडा इंस्टीट्यूशन को ही सबमिट करा जाए फॉर द अवार्ड ऑफ डिग्री कमर्शियली पब्लिश हुए नहीं लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक थेसिस एंड डिसर्टेशन शोध गंगा रे अवेलेबल अछि। देन पीयर एग्जामिन्ड बाय एक्सपर्ट पैनल। देन लेंथ वेरी करे डिपेंडिंग ऑन द डिसर्टेशन और थेसिस। स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन लिटरेचर रिव्यू मेथोडोलॉजी डाटा एनालिसिस रिजल्ट कंक्लूजन बिब्लियोग्राफी एतिकी बेसिक रहे। यूजीसी मैंडेटरी को अच्छी सबमिशन टू शोध गंगा फॉर ऑल पीएचडी थेसिस फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटीज। जदि प्रिंट आउ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रे देखिवा तो से तो कॉमन डिफरेंस रहला जेंति फिजिकल आउ डिजिटल कॉपी पीडीएफ फॉर्म रे रहे एक्सेस जोड़ा यूनिवर्सिटी एक्सेस हबो गोटे वर्ल्ड वाइड एक्सेस। देन डिस्कवरेबिलिटी यूनिवर्सिटी ओपैक ओनली ए गुडा कोन इलेक्ट्रॉनिक डा एंड गूगल स्कॉलर रिपोजिटरीज स्कोपस एथिरे पाई परियो। फिजिकल रो डीओआई न थाए डिजिटल रो डीओआई थाए। अवेलेबल वाया इंटर लाइब्रेरी लोन स्लो प्रोसेस बट ईटीडी इलेक्ट्रॉनिक थेसिस हमें डायरेक्टली डाउनलोड कर परियो। 3 to 5 बाउंड कॉपीज टू यूनिवर्सिटीज इंडिया रे मैंडेटरी आउ जो माने पीएचडी करछन से मानकर शोध गंगा रे सबमिशन डा मैंडेटरी। इंडिया की रिपोजिटरीज होची शोध गंगा देन एनडीएलटीडी
network digital library of thesis and dissertation एटा इंडिया रो नुह बट यूएस रे भी सेम टाइप रो अछि देन ProQuest dissertation in thesis एटा लार्जेस्ट कमर्शियल ईटीडी डाटाबेस टा बट एथि पे सब्सक्रिप्शन दरकार इथोस जोड़ा यूके रो इलेक्ट्रॉनिक थेसिस ऑनलाइन सर्विस किछिरा फ्री अछि किछिरा पेड अछि देन डाट यूरोप देन शोधगंगा इंडिया रो जो स्टैटिस्टिक्स देखिबा 24 800,000 thesis from 900 plus universities deposited in शोधगंगा देन देखो ट्रेड लिटरेचर रेफर करे कागो पब्लिकेशन इश्यूड बाय मैन्युफैक्चरर्स सप्लायर्स प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेड एसोसिएशंस सेनागो प्रोडक्ट विषय रे सर्विस विषय रे बा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन विषय रे तो एटा कोइ परिया नॉन कन्वेंशनल प्राइमरी सोर्स it contains original fast and technical information about product that may not be available elsewhere देखो नॉन कन्वेंशनल रे कौन आछे बा ग्रे लिटरेचर माने जोड़ा नॉट पब्लिश्ड कमर्शियल थ्रू कन्वेंशनल कमर्शियल पब्लिकेशन एग्जांपल टेक्निकल रिपोर्ट प्री प्रिंट कॉन्फ्रेंस पेपर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स ये सब आउ हार्ड टू फाइंड नॉट पीयर रिव्यूड ऑफन फ्री और टाइमली आरो कैरेक्टरिस्टिक्स गुडा देखो और टाइप्स गुडा देखो प्रथम टाइप्स देखिबा तापर कैरेक्टरिस्टिक्स को जिबा टाइप्स से प्रथम आसीबो प्रोडक्ट कैटलॉग जोथिरे कोन थाए कॉम्प्रिहेंसिव लिस्टिंग थाए सब प्रोडक्ट गुडा कर तार स्पेसिफिकेशन कोड गुडा का प्राइस गुडा का देन टेक्निकल डाटा शीट्स तार स्पेसिफिकेशन गुडा का परफॉर्मेंस डाटा इंडिविजुअल प्रोडक्ट देन ब्रोकर बा पैम्पलेट गुडा का जेटा प्रमोशनल मटेरियल थाए डिफरेंट कंपनी रो बा प्रोडक्ट रो देन प्राइस लिस्ट माने करंट प्राइसिंग इंफॉर्मेशन जोटा कि अपडेट ही था फ्रीक्वेंटली देन एनुअल रिपोर्ट गुडा को कंपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जोटा कि एनुअली पब्लिश होता है बा शेयर होल्डर मान को दिया जाता है देन प्रोस्पेक्टस इनविटेशन टू इन्वेस्ट माने कंपनी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल डिसीजन मान को पे फाइनेंशियल डिसीजन नेबा पे से सब टेक्निकल मैनुअल जेंदी ऑपरेशन इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस मैनुअल ए सब गुडा को देन स्टैंडर्ड कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स गुडा को जोटा कि प्रोडक्ट कंप्लायंस सो करे आईएसओ बा बीआईएस स्टैंडर्ड गुडा को देन आसला कैरेक्टरिस्टिक्स प्राइमरी सोर्स ओरिजिनल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर नॉन कन्वेंशनल बा नॉट पब्लिश्ड थ्रू कन्वेंशनल एकेडमिक बा कमर्शियल पब्लिकेशन देन मार्केटिंग ओरिएंटेड माने प्रोडक्ट गुडा को प्रमोट करिया पे कराई था उसे देन करंट जो देखिया फ्रीक्वेंटली अपडेट हुए एगुडा को लेटेस्ट प्रोडक्ट और प्राइसिंग को नेगी देन फ्री और लो कॉस्ट मोस्टली फ्री था मैन्युफैक्चरर माने दियंती बा वेबसाइट रे अवेल करंती देन नॉट पीयर रिव्यूड नो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट रिव्यू जर्नल जेम दे रिव्यू है देन डिफिकल्ट टू एक्वायर मोस्टली सिस्टमैटिकली कैटलॉग होता है रिक्वायर डायरेक्ट कांटेक्ट फ्रॉम विद द मैन्युफैक्चरर्स देन एक्सेस डाटाबेस थॉमस रजिस्टर यूएसए कंपास इंटरनेशनल इंडिया मार्ट ट्रेड इंडिया ये सब उधर हमको कौन डिफरेंट प्रोडक्ट कैटलॉग बा प्राइस लिस्ट ये सब गुड़ा डिटेल रे मिल जाए देखो ट्रेड लिटरेचर गोटे ग्रे लिटरेचर कहि परिबा टाइप कहीं ना पब्लिकेशन प्रोड्यूस आउटसाइड कन्वेंशनल मीडियम ग्रे लिटरेचर ये सब जा आछे टेक्निकल रिपोर्ट हला प्री प्रिंट कॉन्फ्रेंस पेपर जदी पब्लिश होनी ऑफिशियल एकेडमी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जेंदी डीआरडीओ रिपोर्ट गुडा को एगुडा पब्लिश हुई कि पब्लिकली बा तो ये सब गुडा को आछे ग्रे लिटरेचर तो डाटाबेस गुडा को भी अछि यूरोपियन ग्रे लिटरेचर रो सिगल बा सिस्टम फॉर इंफॉर्मेशन ऑन ग्रे लिटरेचर इन यूरोप देन एनटीआईएस नेशनल टेक्निकल इंफॉर्मेशन सर्विस यूएसए एगुडा मेजर ग्रे लिटरेचर डाटाबेस गुडा को चलो किछटा क्वेश्चंस गुडा देखि दवा which is most important primary source of current scientific information answer is current information scientific journal by periodicals ISSN stands for international standard serial number conference proceedings are classified as which type of source primary which of the following is the national ETD repository of India electronic thesis and dissertation that is your Shodhganga BIS stand for Bureau of Indian Standards
A patent is valid for how many years from the filing date? 20 years. Which database provides free access to European and international patent? SPaceNet, जोटा EPO by European Patent Office operate करे. Trade literature classified as which type of source? Primary, non-conventional source. Caliber stands for Convention on Automation of Library in Education and Research. ISO is headquartered in Geneva, Switzerland. Which of the following is a peer-reviewed primary source? Peer-reviewed primary source कही journal articles. NDLTD stands for Network Digital Library of Thesis and Dissertation. Option B है. Which type of journal is freely accessible without any subscription? सेटा होची open access journal. The impact factor of a journal is published by Clarivate Web of Science. Which patent database is provided by the Indian Patent Office? IP India e-patent search. Conference papers are considered primary source because they are the first public presentation of new research. PCT stands for Patent Cooperation Treaty. Sodh Ganga submission is mandatory for universities due to UGC guidelines by notification 2018. SIGAL is a database for which type of literature? Grey literature. देखो आंसर देती है ग्रे लिटरेचर. Which is the oldest national standard body in the world? BSI British Standards Institute जोड़ा 1901 रही थी. An e-journal differs from a print journal primarily because of it allows multiple simultaneous user and full text. Which of the following is not a characteristic of patents? Must be peer reviewed by journal referees. एटा दरकार नहीं patents. Trade literature is also known as grey literature by non-conventional literature. Primary source. Which Indian journal covers library and information science? Decidoc, DJLIT. Ethos is an ETD database from UK. United Kingdom British Library. International Patent Classification IPC system has how many sections? 8. Which provides free access to patent from the USA? Google Patents. Which Indian National Conference focus on library networking? NACLIN, National Convention on Library and Information Networking. eSodh Sindhu provides access to e-journals for Indian Universities Library. Which of the following is a characteristics unique to these thesis among primary sources? Most comprehensive, include complete methodology and literature review. Option C. So এই ভিডিওରେ ଏତିକି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ. PDF ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କରେ ଅପଡେଟ୍ ହେଇଯିବ. କିଛିଟା ଅପଡେଟ୍ ହେଇଛି ଆଉ କିଛିଟା ଅପଡେଟ୍ ହେବ. ତ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡେ. ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ. ୟାର ନୋଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଇ ୟୁନିଟ୍ର. ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ.